Digan keçiler inşallah bir yol çıkmaz. Kalkın vermez. Bir dostuma kimlikçi. Bu da. Şunu bile aldığımız rahat kılıp. In a secret location in Pakistan, Mohammed Umer is running an underground railroad, smuggling Uyghur Muslims out of China. मैं अभी से नहीं, मैं तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारी फैमिली भिजवाए हैं, बहुत सारी फैमिली के मसाइल किए हैं, जो वहाँ से हमारे उइगुर जो वतन से आते हैं. तो इंशाल्लाह हम आगे भी नेक्स्ट में यही करते रहेंगे. हमारा फ़र्ज़ है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. Herim yol Afganistan'da, herim yol Pakistan'dan da. Adam varmaz, memam bulmaz, memam kıkan adam üzüm başını böyle Afganistan'a çıkıp durdu. In the Xinjiang region of western China, the government has been working to erase Uyghur culture, tearing down mosques, schools, and cemeteries, and building vast concentration camps for more than 3 million people. The U.S. calls what's happening genocide. For Niaz Ghafoor, a Uyghur Muslim scholar, Pakistan is one stop on the road to escape China's reach. He fears for the family he left behind. Onun neyime kıldığanlığını ben hazırgıç okumayman. Belkim o hazır sırttı mı ya cildi mi ya terbiyeleş lagırdı mı? Bunun ben naydı bek perişan. Eğer bu işki balan bile ben basam bizge bu dünya yeryüzü turuşundaki imkaniyet bağımı yok. Bunu Allah'ın yüzüge emanet bu. Umer's family left China in the 1950s, back when he and other Uyghurs could cross the border by bus. Now, because of Umer's work, even contacting his family back in China is extremely risky. फिर वो जो हमारे वहाँ पे जो रिश्तेदार वगैरह थे, फिर उनको बहुत तंग किया कि ये उम्र के रिश्तेदार है, उनको पकड़ के ले गए, फिर बहुत ज़्यादा पूछताछ वगैरह करके, फिर वो टॉर्चर करके उनको फिर इस तरह तंग किया उनको बहुत ज़्यादा. और अभी वो हमारे साथ रब्ता नहीं करते, उमर को कोई कॉल नहीं करता कि हमें तंग करते हैं वो लोग वहाँ पे. बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है बहुत. हम भी चाहते हैं कि चाइना जाएं, आएँ, हमारे वहाँ पे हैं रिश्तेदार, तो फिर इस तरह नहीं जा सकते हम लोग. उमर डरता है, उमर कहता है कि फिर मेरी फैमिली को कोई कुछ कहे ना वहाँ पे. बच्चों, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये क्या है. ये है मस्जिद, ईदगाह मस्जिद, तारीखी मस्जिद है हमारे उइगुरों का. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ईदगाह मस्जिद. ये तारीखी मस्जिद है हमारे अब्बा और अजदादों का है. ठीक है जी. At the school Umer founded more than a decade ago, he teaches the Uyghur language to a new generation whose culture is under threat. ये हमारे टोपी है. आप सब जानते हैं टोपी के बारे में. आपकी टोपी है सारे. तो ये टोपी हमारा कल्चर शो करता है. कल्चर क्या है? कल्चर हमारी पहचान क्या है? अब इसको जब हम पहनेंगे फिर हम पहचाने जाएंगे कि हम कौन हैं. उइगुर. फिर 2009 को फिर बाकायदा एक अनाथिल मकतब मादरी ज़ुबान स्कूल मैंने बुनियाद रखी. तो 15 बच्चों से मैंने स्टार्ट ली. तो होते हुए तकरीबन 7 से 8 माह के अंदर 100 बच्चे हो गए मेरे पास. बहुत अच्छी तरीके से हम तालीम दे रहे थे बच्चों को, मादरी ज़ुबान के भी तो तालीम भी. जब वो मादरी ज़ुबान कच्चा ख़त्म हो जाती है, उस कौम का वजूद ही नहीं रहता है. हमारा भी वजूद ख़त्म होता जा रहा है. हम इस वजूद को दोबारा से जो है ना ये कामयाब करना चाहते हैं. Umer once did this work without getting much attention, but recently he and other Uyghur dissidents in Pakistan have been labeled terrorists by Chinese authorities and come under scrutiny of the local government. मुझे यकीन है कि मैं गलत काम नहीं करता. मैं एक इंसानियत की खिदमत ही करता हूँ. जो इंसान फंस गया हो, जो गरीब हो, उनको मदद कर देता हूँ. मैं कोई दहशतगर्द तो नहीं हूँ ना. हाँ, चाइना तो मुझे दहशतगर्द ही कहती है. वो हमसे खौफज़दा हो के तो ही हमारे ऊपर इन्होंने ये किया हुआ है. हिटलर से भी ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए कर रहा है. नस्ल कुशी है तो ये हमारे अंदर छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के बच्चे मार कर दिए इसने. मार रहे हैं उनको. जैसे इतने जुल्म हो रहा है कि Pressure on Pakistani security forces is just the start of China's influence on its neighbor.
as Beijing pours money into infrastructure projects that link the two countries. It's all part of China's One Belt, One Road plan, which aims to give China direct access to trade with Europe, Africa, and the rest of Asia. Pakistan is key in helping China tap oil markets in the Middle East, and Beijing is spending $70 billion on what it calls the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC. Together, Pakistan and China are entering the next phase of CPEC, with greater emphasis on socio-economic uplift, poverty alleviation, agriculture cooperation, and industrial development. Pakistan's Prime Minister Imran Khan is a nationalist, looking for ways to counter the country's historic rival, India. CPEC gives him a chance to do that and promise economic growth. We are changing Pakistan's economic landscape and, inshallah, the destiny of our people. And there's definitely money to be made, especially for CPEC lobbyists like Mushahid Hussain. I said we don't have a relationship with China. We have a romance with China. We talk of our relationship as being iron brothers. We talk of our relationship as being higher than the mountains, deeper than the oceans, sweeter than honey, and stronger than steel. There is, first of all, the inexorable shift in the global balance of economic and political power from the West to the East in what is generally being termed as the Asian century. Pakistan is the only country in the world that was founded explicitly as a Muslim nation. That and the fact it borders China is what's attracted Uyghur immigrants for decades. Now, Umer and others are stunned by what they see as a kind of rejection by the Pakistani government. लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है सीपैक की वजह से हम उइगुर कौम को हुआ है। देखिए जी, आज से 3 साल पहले जो सीपैक का मुआहदा नहीं हुआ था, वहाँ सख्तियाँ थी, इतनी नहीं थी। अब उन्होंने हमसे तिजारत भी खींच लिया, रोड भी ले लिया, पासपोर्ट भी ख़त्म हो गया। ये सीपैक के मुआहदे होने के बाद से ये काम हमारे पर ज़मीन शुरू हुआ है। Ama hükümet bu China bilen bu belki yakın bağlantısı bolgandyken bular China neme kılan dese şunu kıvatıda hazırgıçılık. Hazır şu yolunun sebebinin Uygurluk işinde hapalık itibadı dendi. Bu şu işinin sebebinden hazır şu sepek mi epek mi şunun sebebiyle hazır tekrar bek bu halat harap olup gitti. तो चाइना को जब ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिला कि यार ये बच्चों को तो अपनी मादरी ज़ुबान और कल्चर सिखा रहे हैं, तो उसने फिर पाकिस्तान एजेंसी के थ्रू हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उस धमकियों को इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा यार मैं गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन बार बार मुझे बुलाया गया। उन्होंने मुझे बहुत मारा जी, मेरा यहाँ जख्म है, देख सकते हैं आप लोग। मुझे पट्टों के साथ उन्होंने मारा मुझे। अब ये काम मत करें, हमारे चाइना पाकिस्तान दोस्ती मत ख़राब करें। मैंने कहा यार मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, मेरा हक है बच्चों को ये तालीम दिलाना, मेरा हक है। लेकिन कहते हैं नहीं, चाइना नाराज़ है आपसे, चाइना नाराज़ है। मैंने बहुत जुल्म खाई। In one instance, Umer says Pakistani forces came looking for him, but found his family instead. वालिद साहब मेरे घर में थे, कुछ चंद लोग आए। वालिद साहब के बकौल की वर्दी, एक वर्दी में था, बाकी वर्दी में नहीं थे। उसने मेरे बारे में पूछा कि उमर कहाँ है, तो वालिद साहब ने कहा कि वो घर में नहीं है। उन्होंने मेरे वालिद साहब को घसीटा, तो उनको धक्का दिया, उनके पाँव घुटने में उनके जख्मी हो गए थे। Umer says his father never recovered from the trauma and died a few months later. He and his family are not the only Uyghurs to be targeted by Pakistani forces. ये जो कुफारा में
जिसको एम्बेसी ने यहाँ तकसीम किया है, यहाँ उइगुरों का बायोडाटा इकट्ठा करने के लिए, जो हमारे लिए ये गोली से भी ख़तरनाक चीज़ है, बम से भी ख़तरनाक चीज़ है हमारे लिए, कि उन्होंने ये देखना है कि यहाँ पर जो असल जो उइगुर हैं वो कितने हैं, जो हमारी हाथ डालना आसानी हो जाए. The document Umer is holding asks for descriptions of his family, visitors to his house, and what they look like. Umer says local authorities are paying his neighbors to fill out documents like these. This is a common practice in China, as seen in this leaked table of more than 300 Uyghur names from Xinjiang. Officials use the information to determine who to imprison. देखिए जी, दुनिया के अंदर बहुत से मज़हब है. चाइना एक ऐसा मज़हब है, ना ये कुरान को मानते हैं, ना ये सूरज को मानते हैं, ना ये बुद्ध को मानते हैं. ये किसी चीज़ को मानते ही नहीं है. इनके ज़हन में है कि सब चीज़ ऐसे ही है. तो इसलिए हमें वो कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे जैसे हो जाए. उनका ये मकसद है. The crackdown on Uyghurs began in the wake of a string of terror attacks in Xinjiang, like a riot in 2009 that killed 140 people and left hundreds more injured. Chinese officials blamed the Muslim separatist group then known as the East Turkestan Islamic Movement. The subsequent campaign against ETIM decimated its capabilities in China, but the government says what remains of the group has moved over the border to Pakistan. China still uses ETIM as justification to go after Muslims in China and to put pressure on the Pakistani authorities to go after Uyghurs like Umer. And Pakistani's leadership appears willing to look the other way so that CPEC is completed. You're doing business with China. Does that mean you can't criticize them when it comes to what they're doing to the Uyghurs? I do not know the exact situation of this, but I can tell you one thing. The Chinese have been a breath of fresh air for us. And I must say, the future, we have these plans of reviving our economy. China is going to play a huge part. Chinese officials in Pakistan are also quick to ignore the Uyghur question and instead focus on what China's done to help Pakistan fight terrorism. For those Western media who are focusing, on this so-called human rights issue in Xinjiang, I think, my advice for them is to first to get your own house in order. I can see that Pakistan's security situation has been improved a lot. When I came here, 5 years ago, Pakistan government at that time was trying to start, campaigns, to eradicate, those extremists and terrorists. We Chinese are trying also our best to protect ourselves. Thousands of Chinese workers have moved to Pakistan to work on CPEC projects, and not all of those who immigrated here work in construction. Yusuf Mohammed moved to Pakistan 8 years ago to teach Mandarin language classes. I come here 2011. I was just the 4 or 6 class, maybe just 60, 80 students. But after 2 years, CPEC is more than 600 students. Yusuf isn't here for the short term. He married a Pakistani woman, and they have a son. I think when we got married, we haven't heard any other Pakistani girl married to a Chinese guy. Let's go find Papa. There are 4 or 5 more couples that also got married after us. I think it's also normal things. Just now we get more chance to meet each other, Chinese people or Pakistani. I know the more people, they want to learn Chinese. They want to do business with the Chinese. They want to earn money from China. They think Chinese language is the future language. 车上有
几个人 Good. At the school where Youssef teaches, students are betting on the future of China and Pakistan. But the CPEC program hasn't quite gone to plan. Only about a third of the work is done. One reason for the delay, terrorist attacks against CPEC developments and workers. For China, the most strategically important spot in Pakistan is Gwadar, a city in the southwest province of Balochistan. It's home to the Baloch people, who speak a different language than the rest of Pakistan's population and have been fighting for independence for decades. The group leading that fight now is the Balochistan Liberation Army. China's military expansionist designs in world are an open secret. In our opinion, One Belt, One Road project is solely to strengthen Chinese military hegemony in the region. The BLA have launched a series of attacks against CPEC projects. In 2017, they targeted a 5-star hotel in Gwadar, killing 5 people. And a year later, attacked the Chinese consulate in Karachi, killing 7. In this propaganda video released shortly after the Karachi attack, we see the BLA fighters saying goodbye to their families for the last time. The BLA have seen the British and the Americans fail to gain control of the area and don't think the Chinese will do any better. I repeat, we will resist and target Chinese and Pakistani interests in the region. In fact, our attacks will be more intensified in near future. I think this Balochistan Liberation Army, this is a terrorist organization. They are attacking the Chinese consulate. I think, they are trying to embarrass the Pakistani government. I think their attempt is a failure. We appreciated, the braveness of the Pakistani law enforcement agencies. Those terrorists, they will be rotten in hell. I think China-Pakistan relationship has been further cemented, after this incident. At the Red Mosque, where the Taliban are known to have trained, Imam Mohammed Abdulaziz has a sense of the anger that's driving these attacks. हम ये समझते हैं कि देखिए मसला इस मुल्क का ये है कि हमारा अलमिया ये है कि इस मुल्क पर ऊपर हमारे ऊपर जूकें बैठी हुई हैं। जूक के वो कहते हैं एक पानी में चीज़ होती है, जब लग जाती है तो चूस दे सारा खून। Abdulaziz believes Chinese investment here will do what other investments have, make the rich richer, while millions of Pakistanis live below the poverty line. आज अगर पाकिस्तान के आप देहाती इलाकों में चले जाएं, वहाँ जाके बूदो बाश जरा देख लें कि किस बुरी हालत में वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो करप्ट सिस्टम है। तो इसलिए जब तक कि इस मुल्क का सिस्टम करप्ट निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, उस वक़्त तक यहाँ कोई CPEC कोई ख़ास खातिर ख़्वाह उससे फ़ायदा होने की उम्मीद नज़र नहीं आती। हम अमेरिका के जो है इसी तरह चाइना के साथ भी हम चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात रहें, हमारे अच्छे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई दुनिया में ये समझता है कि हमें टेक ओवर कर लेगा और हम पर तसल्लुत हासिल कर लेगा, तो ये उसकी भूल है। CPEC might help Pakistani's economy grow, but there is reason to be skeptical about the terms. China has only lent its neighbor the funding for the project. And now Pakistan is on the hook for billions of dollars of high-interest loans, which the U.S. State Department describes as predatory lending. If Pakistan can't pay on time, they will have to hand the land over to the Chinese government, a situation that's already playing out in Sri Lanka, where the government had to hand over control of a port to China. ज़ुबान एक ऐसी नेमत है, ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है कि इस ज़ुबान की वजह से हमने अपने रिस्क कमाते हैं। अब क्यों अब अबाव इर्दाद सब कौन थे? उइगुर थे ना?
हमें जुबान नहीं भूलना चाहिए ना अब किसी जुबान तो नहीं आती इस वक्त अब आपको सबको मेहनत करना पड़ेगा Umer fears that China's influence isn't just changing Pakistan's economy or its culture. It's making it impossible for his community to imagine a future here. हमें अंदेशा हो रहा है कि आने वाला वक्त ये भी चाइना कॉलोनी बन जाएगी ये CPEC रोड ये अपने नाम पे करवा लेगा वो कहेगा भाई ये जो रोड मेरा है जब ये रोड पूरा एरिया में इस्तेमाल कर लेना फिर अपनी मर्जी कर ली उन्होंने फिर दरअसल चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पावर बनना चाह रहा है तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको ही ख़त्म कर दो तो हमारे लिए अंदर कोई परेशानी ना हो क्योंकि इनको मार दिया जाए सबको या इनको इस तरह वो कर दें कि ये किसी की जगह रही नहीं जो कि आज जो हमारे साथ जो हो रहा है इस वक्त वो इस मकसद में कामयाब होता जा रहा है इस वक्त Umer faced increased harassment from Pakistani security forces this year and ultimately had to abandon his school and flee from his home. He's currently trying to leave the country.